Okay, very good evening to one and all. And today in this particular video, I'll be talking about IIFT verbal section, or I would say IIFT over the years, right? So from past few years, what this exam was like, and specifically if I talk about verbal ability and reading comprehension, what is this section was like, and what students needs to understand, they need to learn, or they need to take care of while going for this particular examination. That's what I'll be discussing today in this video, which is on Indian Institute of Foreign Trade, Delhi, one which is one of the prestigious institute and aspiration for many, right? So if I talk about verbal section, अगर मैं verbal section की specifically बात करूं for that matter IIFT के अंदर, so the agenda of this particular session is we'll talk about types of questions कि किस तरीके के questions आते हैं. We'll talk about difficulty level of the questions, right? How what is exactly the difficulty level, whether they are easy when it compares to when we compare it with CAT exam, or it is tough when we compare with the ZET examination, or for that matter other exams like SNAP or NMET. What exactly is the cutoff if I talk about verbal ability and reading comprehension, and what I need to prepare, because how to prepare, how to prepare is something which I'll be talking about, and what needs to be prepared will cover up in the kind of questions or the type of questions which are being asked as far as IIFT is concerned. So if I go ahead and if I talk about IIFT 2022, right? So ignore this CAT 2022, it's IIFT 2022. So if I talk about IIFT 2022, because I was doing the CAT session, earlier, so haven't changed it. So if I talk about IIFT 2022, now if you see here, so reading comprehension, so we are talking about number of passages, right? So there were 4 passages, 16 questions specifically. That's what we were doing. That's what IIFT 2022 were talking about, right? So हम लोग total बात कर रहे थे. There were 4 passages in total and 16 questions here, right? And as far as IIFT is concerned, and level is moderate. There were 2 passages or 3 passages, I would say, which is very easy, and there is specifically 1 passage which was lengthy, and we could avoid that passages. Students should have avoided that passage if at all needed. So that's what reading comprehension in 2022 IIFT. If I talk about vocab, it was a moderate, if I would say, section overall. So vocabulary overall 11 questions, right? So here I am talking about idioms and phrases. I'm talking about analogies, again a moderate level. If I talk about vocabulary, grammar 4 questions, moderate level, and spelling again 1 question, and others, there are other questions, 3 specifically para jumbles जो हर साल पूछे जाते हैं, right? So 3 para jumbles आप हर साल expect कर सकते हैं, 11 questions vocabulary के अंदर आप cover expect कर सकते हैं, 4 questions in grammar. So it was the scenario in IIFT 2022. So there were overall, if I talk about 35 questions, and total marks were 105, and cutoff, if I talk about of this particular section, was somewhere around 30, and overall cutoff for IIFT this year 2022 general category male was 130, and if I talk about verbal ability specifically, good attempts were 23, right? So somewhere around 23 to 22 plus attempts would be good attempts as far as IIFT 2022 is concerned, right? So now if I talk about what to prepare and all those stuff, now agar aap yahan dekhenge, so there were 4 passages as far as reading comprehension is concerned, right? So reading comprehension अगर आप CAT level का कर रहे हैं तो more or less everything is covered, ठीक है? सो वहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वोकैबुलरी आई थिंक आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हम कैट के अंदर वोकैबुलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, दो आई ऑलवेज से दैट इट्स लाइक oxygen to your language section, because wherever you go vocabulary is something which is needed. So but the point is you need to understand that मुझे IIFT के लिए अगर स्पेसिफिकली वोकैबुलरी डेवलप करनी पड़ेगी, इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को मैं जब वोकैबुलरी की बात करता हूं या ग्रामर की बात करता हूं, स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर क्यों करवा रहे हो, हमें तो IIM अहमदाबाद के अंदर ही जाना है, तो वहां के लिए ग्रामर क्यों? बट गाइस यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट दीज आर द एग्जामिनेशन जो जिसके अंदर वोकैबुलरी ग्रामर बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है. पैरा जंबल्स आई थिंक कैन बी कवर्ड अप, स्पेलिंग आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ मच चैलेंज, बट ये दो जो सेक्शंस हैं जो आप कैट के अंदर जनरली इग्नोर कर देते हो, तो मेरा सजेशन है इसको शुरू से ही, आई मीन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, राइट? सो दैट वाज IIFT 2022. If I talk about IIFT 2021, अब देखेंगे अगर IIFT 2021 के अंदर, so good attempts if more or less will remain the same,
राइट। अब आपको ये देखना है, जो मैं हमेशा समझाता हूं आप लोगों को, या कैट के अंदर भी हम लोग जब बात करते हैं, सो ज्यादा फर्क हमारे को नहीं पड़ता है, मतलब नहीं होता है। ओवरऑल द डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस रिमेन द सेम। सो इफ यू सी हियर, अगर आप यहाँ देखेंगे, सो जस्ट अ मिनट, या इफ यू सी हियर 2021 के अंदर स्पेसिफिकली 4 पैसेजेस अगेन, राइट। 4 पैसेजेस वहां पर भी थे, यहाँ पर भी थे, मॉडरेट मॉडरेट। vocabulary questions from 11 went down to 9, or from 9 went up to 11 in 2022. Grammar questions again more or less same, ठीक है। spelling questions नहीं था, उस पे 1 था, others 2, वहां 3। सो ओवरऑल अगर यहाँ देखोगे, सो 32 क्वेश्चंस थे, 32 से हम 35 पे चले गए। टोटल मार्क्स अगेन समवेयर अराउंड, आई मीन यहाँ पर अगर टोटल मार्क्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 105 मार्क्स पेपर, कट ऑफ अगेन 28 to 30, overall cut off again somewhere around 130, and good attempts is somewhere around 20 to 25. If I talk about IIFT 2020, राइट, अगर मैं IIFT 2020 की बात करूंगा, अगेन यहाँ पर एनालॉजी क्वेश्चंस थे, जो कि हम 2 साल नहीं देख रहे थे, कैट 2021 के अंदर या 2022 के अंदर। हालांकि एक आधे क्वेश्चंस थे, बट मोर और लेस काइंड ऑफ वोकैब बेस्ड, मैंने उसको वोकैब के अंदर कवर कर दिया। यहाँ पर वोकैबुलरी वाज डिफिकल्ट बोथ इन 2020 एंड 2019 एज वेल, राइट। IIFT की मैं अगर बात करूं तो पैसेजेस अगेन यहाँ पर इजी थे, बिकॉज देयर वर मेनी क्वेश्चंस जो कि फैक्ट बेस्ड थे, राइट। यहाँ पर भी 35 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप देखोगे IIFT 2020 के अंदर 35 क्वेश्चंस, if I talk about IIFT 2021, we are talking about 32 questions, and then I'm talking about IIFT 2022, again we are talking about 35 questions, right? So again it was more or less a easy paper. यहाँ पर number of attempts I would say 27 से 28, 27 to 28 were decent number of attempts. Overall cutoff for general category male was close to around 115 to 117, and cutoff for verbal ability and reading comprehension was 27 to 30. राइट। अगेन अगर यहाँ पर आप देखोगे IIFT 2020 vocabulary and grammar put together, and you should add analogy as well, 14 क्वेश्चंस। ये जो 5 क्वेश्चंस है, इसके अंदर पैरा जंबल्स क्वेश्चंस थे। सो 14 क्वेश्चंस, राइट। 35 में से 14 क्वेश्चंस वो वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यहां पर अगर आप देखेंगे अगेन 9 + 5 14 क्वेश्चंस वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यहां अगेन अगर आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस वोकैबुलरी एंड ग्रामर। सो गाइस प्लीज, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू प्रिपेयर के अंदर, कि आप थोड़ा डिटेल के अंदर जाइए और वोकैबुलरी और ग्रामर को करना शुरू कीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's go to IIFT 2019. Those who have joined in just now, those who are listening to our live session, just to update you, this is IIFT going on, right? And sorry, I have mentioned CAT in the PPT because I was taking CAT earlier, so it is a IIFT PPT. हम लोग IIFT की बात कर रहे हैं specifically. CAT के अंदर vocabulary नहीं आता है, CAT के अंदर grammar नहीं आता है, right? So sorry. So if I talk about IIFT 2019. Again 14 questions, 9 + 6, I'm 15 questions here. I'm talking about vocabulary and grammar, राइट। सो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पर आपका लगभग 50% पेपर ग्रामर और वोकैबुलरी के अंदर आता है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। एंड कट ऑफ अगर आप देखेंगे ओवरऑल 30 के आसपास कट ऑफ रह रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है 26 से 28 रह रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ओवरऑल आई वुड से 35 मिनट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू डू, व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ as far as IIFT is concerned. Now going back to I'm coming to how to prepare or the focus areas. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक यही बोलता आ रहा हूँ। आप रूट वर्ड्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। आई मीन आप नॉर्मल लुइस से आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ हालांकि स्टूडेंट्स को दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड नॉर्मल लुइस, इट डजंट मीन दैट यू विल स्टार्ट सीइंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, बट यस इन IIFT आई हैव सीन दैट कि हमारे को यहाँ से एटाइमोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आर अगेन प्रीडोमिनेटली आस्क्ड as far as IIFT is concerned, right? So all these things you need to take care of, and as far as IIFT is concerned. So this is what I thought I'll just share with you कि जो लोग IIFT को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास क्या फोकस एरिया होना चाहिए अभी से। And in the next video I'll come up with much more details as far as verbal ability and reading comprehension is concerned, about other exams. So stay tuned and keep watching Ekoching. And again, those who have joined for this particular session, this is basically I've talked about IIFT over the years, right? So thank you, stay tuned and keep watching Ekoching. Thank you.